Hi guys, welcome back. Let's do the numerical of labor supply and overtime. So what I've done is कि मैंने ना एक ही क्वेश्चन करा है यहाँ पे इस वीडियो में और उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया है. Once you know the method of the numerical, then all the numericals are the same way. The only thing is कि इसके numericals बहुत important थे. They are really important, and it has a few different things the way you want to look at the questions. So that's why assignment is very important. The other thing is कि मैंने ना हर एक क्वेश्चन में काफी सारे केसेस इकट्ठे करे हैं. In the exams you may get one or two cases and may not get all the cases together. So जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि वो किस एक या दो केसेस की बात कर रहे हैं. Because I have combined a few together. ठीक है? So let's look at the question. U is equal to C into R. C is consumption, R is relaxation. So U हमारे को given है C into R है. Wage rate is 8 rupees per hour. R bar is given to us as 18 hours and the non-labor income is 16. हमारे को figure out करना है कि उसके पास total number of relaxation कितना है और labor supply कितनी है और जब wage rate change हो जाए तब कितना है, overtime होता है तो तब कितना. इन दोनों पे बाद में आएंगे. सबसे पहले ये देखते हैं. The first things first. When you draw the diagram, you detect R on the x-axis and C on the y-axis. So the first thing you do is when you see the function is कि आप U is equal to R into C. आपका हमेशा गुड वन पहले होना चाहिए. हमेशा गुड वन पहले होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये नहीं करते हो तो कई बार न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं पूरे एंड यू लूज द एंटायर मार्क्स. ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन दिया हुआ C into R तो पहले चीज आप क्या करेंगे, दोनों को अदल बदल के लिखेंगे ताकि आपका गुड वन रिलैक्सेशन पहले आए और C बाद में. देन वी डू द बजट लाइन. बजट लाइन के लिए वी ऑलवेज टेक P टू बी इक्वल टू 1. हमें दिया ही नहीं हुआ है. सो वी हैव C plus WR which is 8 into R is equal to W into R bar plus N. See again मैंने गलती करी ना, मैंने C को फर्स्ट गुड ले लिया. अगर मैं यहाँ पे C को फर्स्ट गुड ले रही हूँ तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा. But since I know that relaxation is the first good, so I should write 8R plus C is equal to W is 8. R bar is 18. 8 into 18 is 144. It's 144 plus 16. So my budget line is 8R plus C is equal to 160. आपके पास बजट लाइन है, आपके पास यूटिलिटी फंक्शन है. करना क्या है आपको पता ही है. कॉप डगलस है. कॉप डगलस मीन्स टेंजेंसी इज माई इक्विलिब्रियम कंडीशन. टेंजेंसी की कंडीशन में लगा सकती हूँ. दैट मीन्स दैट इट इज C by R is equal to 8, which implies that C is equal to 8R. So R is 160 upon 16, which is 10 hours. So I have 10 hours of relaxation. If I have 10 hours of relaxation, then my labor supply is 8 hours. My labor supply is 8 hours. कैसे आया 8 hours? 18 घंटे टोटल है, उसमें से 10 घंटे का रिलैक्सेशन, तो बचेगा कितना? 8 hours. So my labor supply is 8 hours and my consumption consequently is C into 8 R which is 80. So मेरे पास सबसे पहला कर्व आ गया. First thing I have taken out. So I have R, I have labor supply, I have C. I am done. The only trick here is to find the budget line. Once you know how to find the budget line, फिर तो आपका बड़ा सिंपल है, right? अब सेकेंड चीज करते हैं. When wages rise to 12 rupees an hour. When wages rise to 12 rupees an hour, what is our new analysis? Our new analysis will be 12R plus C is equal to 12 into 18 plus 16. So I have 12R plus C to be equal to 18 into 12 is how much? 216. 216 plus 16 is 232. So I have U is equal to R into C subject to this. So again C by R is equal to 12. So C is equal to 12R. So I have R to be equal to 232 upon 24. 232 divided by 24, which is approximately 9.67. And C will then be equal to 116. 116. So अगर मेरे पास relaxation के 9.67 hours हैं, तो my labor supply will be how much? Labor supply will be 18 minus 9.67 hours, which is 8.33 hours. So मेरे पास पहले I was working for 8 hours. Now I'm working for 8.33 hours. पहले relaxation was 10 hours. Now relaxation is 9.6 hours. मतलब wages increase करने से उसका relaxation कम हो गया. Wages increase करने से उसका relaxation कम हो गया. मतलब his substitution effect was stronger than income effect. His substitution effect was stronger than income effect. ठीक है, consumption आ गई, right? अब हम करते हैं overtime. See, first thing is कि overtime जो है वो आपको मिलेगा when you work beyond 8 hours. Overtime wages after E0. So E0 पे क्या है? 8 hours.
So when one is working beyond 8 hours is when he will get overtime, right? तो अगर इसका मैं कर्व बनाऊं, पहले मैं यहाँ पे थी, ठीक है, ये मेरा एंडाउमेंट है, सॉरी, पहले मैं यहाँ पे थी ई नॉट, अब ई नॉट से ऊपर जब मैं काम करूंगी तो ओवरटाइम मिलेगा ना। तो मेरे पास एक्चुअली स्पीकिंग दो बजट लाइंस हो गई हैं। एक तो ये ओवरटाइम वाली लाइन की, तो इक्वेशन लाइन की होती है ना। अब लाइन को मैं यहाँ पे रोक दूं या कंटिन्यू करूं उससे तो फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे पास एक लाइन ये है, आई एम कॉलिंग इट रेड लाइन, एंड आई हैव वन लाइन टू बी दिस वे, आई एम कॉलिंग दिस ग्रीन लाइन। सो जब मैं ओवरटाइम कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास एक तो रेड लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए और मेरे पास एक ग्रीन लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। ग्रीन लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, ग्रीन लाइन की इक्वेशन ये रही, यही तो निकाला था ना हमने ई नॉट निकालने के लिए। सो ग्रीन लाइन की इक्वेशन इज व्हाट, 8r प्लस c इज इक्वल टू 160। आई ड्रॉ दैट कर्व हियर। ये मेरी ग्रीन लाइन है, जो मेरी ओरिजिनल लाइन है, जो मेरे एंडाउमेंट है, और यहाँ पे मेरा ई नॉट, तो ये मेरे पास है ऑलरेडी। अब मुझे पता है कि मैंने ओवरटाइम ऑफर करा है, मुझे ओवरटाइम जो है वो 12 पे मिल रहा है, ओवरटाइम जो है वो 12 पे मिल रहा है, तो ये मेरी रेड लाइन है। इसकी इक्वेशन मुझे नहीं, बट यू सी मुझे दो चीजें पता है। मुझे रेड लाइन की स्लोप पता है क्योंकि वेज रेट जो है वो 12 है और जो स्लोप है वो वेज रेट होता है, सो मुझे उसकी स्लोप पता है। दूसरा मुझे पता है द पॉइंट इट पासेस थ्रू। सो इफ आई नो द पॉइंट इट पासेस थ्रू प्लस आई नो द स्लोप, Can I figure out the budget line? Yes, I can figure out the budget line ना। अगर मुझे पता है the point it passes through and I know the slope, I can figure out the budget line. So मुझे पता है इसका जो होगा equation that will be 12r plus c is equal to some income. What income I don't know. But to figure out the income, can I say that it is going to be 12 into making the original bundle just affordable? That's how हम CD निकालते थे ना, make the original bundle just affordable. So original bundle मेरा क्या है? Original bundle is 10, 80. My original bundle is 10, 80. So 12 into 10 plus 80, which is 120 plus 80, which is 200. So the equation of this line is 12r plus c is equal to 200. Did you guys realize मैंने कैसे करा? 12r plus c क्यों आया? क्योंकि वेज रेट $12 है, तो 12r plus c तो वैसे ही आ गया। सीट को तो हम कंजम्पशन का तो प्राइस 1 ही लेते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि मैं न्यू प्राइसेस के ऊपर ई नॉट को अफोर्डेबल कराऊंगी। न्यू प्राइसेस है मेरे 12,1 और ओल्ड बंडल ई नॉट इज 10, 80, तो मैंने उसको अफोर्डेबल करा दी तो 200 आ गया। तो आई हैव द इक्वेशन ऑफ द रेड लाइन व्हिच इज 12r plus c is equal to 200. I have the equation of the green line which is 8r plus c is equal to 160. Now what do I do? I need to figure out कि मेरा यहाँ पे equilibrium क्या है, मेरा यहाँ पे equilibrium क्या है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, I have to maximize u is equal to r into c subject to 12r plus c is equal to 200 because my budget line for overtime is this and this. बट मुझे पता है कि वो ग्रीन लाइन पे तो कंजम्पशन हो ही नहीं सकती ना ओवरटाइम की, क्योंकि ओवरटाइम के लिए ग्रीन लाइन जो है वो रिवील प्रेफरेंस के हिसाब से रिजेक्ट हो जाएगी ई नॉट के फेवर में, राइट? या तो मैं ई नॉट पे कंज्यूम करूंगी या रेड लाइन पे कंज्यूम करूंगी। तो मैं किस पे कंज्यूम करूंगी? रेड लाइन पे, क्योंकि रेड लाइन पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से हम जाएंगे ना, हमने थ्योरी में पढ़ा था, राइट? सो आई हैव टू मैक्सिमाइज u is equal to r into c subject to 12r plus c is equal to 200. So then I have c by r is equal to 12, which implies that c is equal to 12r. So r is nothing but 200. R is nothing but 200 upon 24, which is 8.33. which is approximately 8.34 hours. So when I'm relaxing for 8.34 hours, तो मेरा labor supply कितना होगा? 18 minus 8.34 hours, which is 9.67 hours, which is 9.67 hours. So relaxation हमारा कितना हुआ? 8.34. Labor supply कितना हुआ? 9.67. पहले हमारा relaxation कितना था overtime से पहले? 10 hours का। अब मेरा relaxation देखो कितना कम हो गया, 10 से I've come to 8.34. और जब मैंने overall wage increase किया था तब मेरा relaxation कितना कम हुआ था? 10 से सिर्फ 9.67. So you see the difference. My E naught is 10 hours. मतलब मैं शुरू में 10 घंटे का relaxation कर रही हूँ। जब मेरा overall wage increase हुआ तब मेरा रिलैक्सेशन 10 घंटे से कम होकर 9.6 आवर्स हो 6-7 आवर्स हो गया। मैंने बहुत थोड़ा सा कम किया। लेकिन जब मेरा ओवर टाइम बढ़ा तब मैंने क्या किया, मैंने अपना रिलैक्सेशन सीधा 10 घंटे से 8.34 आवर्स कर दिया, which means I increased my labor supply so much, right? So I hope you guys understood how to calculate the overtime का budget line. See, इसके अंदर गेम क्या है, you just have to figure out the budget lines. आपको सिर्फ budget line निकालनी आनी चाहिए, that's it. Once you know how to
find out the budget line, then the rest is really simple. You already know कि functions को maximize कैसे करते हैं. So the only trick I'm reiterating myself in labor supply is how to figure out the budget lines, and that is also really simple, right? तो अगर हमें कोई बोलता है इसके अंदर हमें कर्व भी बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम E0 पे यहाँ पे हैं, हमारा E1 जो आया वो थोड़ा सा लेफ्ट में आया. So since with an increase in the wage rate my labor supply is increasing but very slowly, that is why my labor supply is an upward sloping curve but it's a little flatter curve. I need a lot of increase in wage for my labor supply to move. और over time में क्या हुआ, मैं यहाँ पे E0 में थी, मेरा E1 यहाँ पे आया यहाँ पे, but यहाँ पे I'm here. That means from 10 hours of relaxation मैंने overall में सिर्फ 9.67 hours किया, लेकिन उसके अंदर तो मैंने 8 point something कर दिया, which means I reduced my relaxation a lot in over time. So I hope this numerical was clear. It was clear how we calculated the budget lines. जो असाइनमेंट है आपकी उसमें भी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बजट लाइन फिगर आउट करनी आ जाए, then the rest of the analysis is very simple. So try the assignment and then watch the next video to understand how the numericals have been solved. All right, thank you.